We have seen what do you mean by nucleotides. We have seen what do you mean by nucleosides. We have also seen structure of DNA, types of DNA. Okay, we have also seen types of RNA. What is meant by central dogma of molecular biology? DNA will be replicated. DNA will be copied as it is from parent DNA. There is no other replication from the DNA. Synthesis of RNA known as a transcription, and from that RNA which is translated into a proteins in the language of protein. So known as a translation or protein synthesis. Right. So out of that we have seen all the process, and today I will take revision of your protein synthesis and then remaining points from that topic, and this will be a last lecture of your biochemistry. After this lecture we will start dispensing pharmacy. There will be two lectures on a dispensing pharmacy. In the two lectures dispensing pharmacy will be completed. After that we will start our physical pharmacy. So it will take around 8 to 10 lecture physical pharmacy, because we have 10 topics, I think 8 to 10 topics. So after that we will start industrial pharmacy. So we have seen the nucleic acid, DNA, RNA. After that, what is meant by cell cycle? I have demonstrated you different phases of cell cycle. After that, we have seen the genomics. We have seen the transcription. Transcription is nothing but the formation of RNA from the DNA. That is transcription. After that, we have seen the protein synthesis. Okay, that is a translation. We have seen this. We have seen the genetic code and all that. Okay, we have seen this part. We have seen the proteins. We have seen the steps in the protein synthesis. So quickly revise it. Different steps in the protein synthesis. So first one, you might know that in the prokaryotic cell means the cell of bacteria, and eukaryotic cell means cell of higher organism. Prokaryotic, in the prokaryotic cell, the ribosome is nothing but the 70s ribosome. That is 70s ribosome. 70 is nothing but the sedimentation coefficient. So that 70s ribosome is divided into, okay, 30s and 50s. Okay, and in case of eukaryotic cell, you have 80s ribosome, which is divided into 40s and 60s. So as we have seen, the replication in the prokaryotes is easy to understand. Transcription in the prokaryotes is easy to understand. So likewise, translation or protein synthesis in eukaryotes is easy to understand. So we have already seen. So quickly revise it. Activation of amino acid. So there is one enzyme known as amino acid tRNA synthase. Amino acid tRNA synthase. Because what is the reaction mixture for protein synthesis? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या लगेगा? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या लगता है? क्या लगेगा? पहला तो आपको लगेगा 20 अमीनो एसिड्स. सो यू शुड हैव 20 अमीनो एसिड्स. तो 20 अमीनो एसिड लगेगा, तो उसके लिए कैरी करने के लिए 20 डिफरेंट टीआरएनए लगेगी. सो 20 अमीनो एसिड्स, likewise that 20 different tRNAs. Then after that you need a nucleotides. You need a sorry, you need a here you need a 20 amino acids, 20 tRNAs. Then you need a mRNA. mRNA is nothing but the genetic code. So whatever DNA is there, so based upon the DNA, mRNA is synthesized, that is in the transcription, and whatever genetic information, whatever genetic genes are there, they are present in the DNA. That is copied on a mRNA, and mRNA is translated. So whatever information is there on a mRNA, that will be translated. So whatever codes are there, so information on mRNA is stored in the form of in the form of codons, triplet codon. So each codon will code one amino acid, okay, for the protein synthesis. So likewise that, so you need a 20 amino acids first. So what is the reaction? आप कोई भी रिएक्शन करते हो, आपके लिए रिएक्टेंट लगता है और उसके लिए कंडीशंस लगते हैं, और बाद में आपको प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है भाई? यहाँ पे रिएक्टेंट है 20 अमीनो एसिड्स. ये एक लगता है आपको रिएक्टेंट. उसके बाद में आपको लगता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए. सो देयर इज अ 20 टीआरएनए. देन एमआरएनए. एमआरएनए क्या है? रीड करने के लिए किसको लाना है, वो किसके ऊपर है? वो एमआरएनए के ऊपर है. सो एमआरएनए इज नथिंग बट जेनेटिक बेसिस. So mRNA is required, tRNA is required, then 20 different amino acids are required, different enzymes are required, different proteins are required, different elongation factors are required, initiation factors are required. Okay, and again
Where this will happen? This will happen in the ribosomes. Everything will be catalyzed in the ribosome. So you need a ribosomal RNA also. So this is nothing but the reaction mixture. Okay, this is nothing but the reaction mixture. mRNA. Okay, this is nothing but the reaction mixture. So first step is nothing but the activation of amino acids. So amino acids will be activated by one enzyme known as amino acyl tRNA synthetase. So you have 20 different amino acids. So you have 20 different tRNAs, and for that you have 20 different amino acyl tRNAs, right? Right. So amino acids, the first amino acid is nothing but the, so always first amino acid is nothing but the methionine, right? Because initiation codon is a UGA, that will code methionine. That's why amino acid is a methionine. Okay, so this activation of amino acid is also two-step process. I have already told you, right? Then initiation of replication, so that requires a initiation factors. We have seen that initiation factors, eukaryotic initiation factors. After that initiation also is in a four step. So first step is the formation of, so फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द राइबोसोमल डिसोसिएशन. यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो राइबोसोम है ना, 70s राइबोसोम, sorry 80s राइबोसोम, so that will be that that will be dissociated. So 80s ribosome will be dissociated into 60s and 40s, right? So ribosomal dissociation, then formation of 43s pre-initiation complex, then third step is nothing but the formation of 48 formation of 48s initiation complex, and lastly formation of 80s initiation complex. Okay. These steps we have seen in the details. Okay. So initiation, in that you have first step is for dissociation of ribosome. Second step initiation for the formation of 43s pre-initiation complex. After that initiation complex of 40s. Then after that formation of 80s initiation complex. We have seen this process already in detail. So just revising steps to you. After that elongation, in the elongation also you have three steps. First step is the binding of amino acid tRNA to the A site, then peptide bond formation, and then translocation. We have already seen this. Termination, when termination codon will come, termination codon, they are known as a nonsense codon, or they are known as a nonsense codon. These are nothing but the termination codons when they will come when mRNA is being read. So mRNA will be read from 5' to 3' end, and initiation codon will be UAG, that is the UU, whatever is the UUA, that will code for methionine. Whatever whatever upcoming codons are there, according to that new amino acid will be brought by tRNA, and there is a formation of peptide bond and translocation, formation of peptide bond translocation according to the codes present on the mRNA. And when there is a nonsense codon, or when there is a termination codon, or when there is a stop codon on mRNA, protein synthesis will stop at that point. Okay, so we have already seen this. If anybody has not seen, they can go and watch the video. Okay, we have already seen this. Now inhibitors of protein synthesis. So we have seen the protein synthesis in the detail. So inhibitors of protein synthesis, so that's why I used to say a lot of times, before studying the pharmacology you have to study anatomy, physiology, biochemistry and microbiology, because these are the basis. So if you don't understand how there is a protein synthesis in the bacteria, how there is a replication in the bacteria, transcription steps, enzymes required for the replication, transcription, translation, so all these are nothing but the targets for antimicrobial drug. I hope I am audible to you. आवाज येत आहे का सगळ्यांना? Yes or no? So inhibitors of protein synthesis, we have seen detail about the protein synthesis, that is a translation. Okay. Now whatever translation is there, so after that the protein synthesis is known as a primary translate. जैसे replication होता है, after the replication whatever mRNA is formed, whatever not mRNA, whatever RNA is formed, that RNA is known as a primary transcript. Mostly it is a hnRNA. उसके बाद में उसका modification होता है. So after that post transcriptional modification is there to get a active mRNA. Likewise that proteins are translated and they are known as a primary translate, and they should be modified
to get a structural and functional proteins, right? So we are going to see after that more translational modification and transcriptional modification. Okay, but inhibitors of protein inhibitors of protein synthesis. So antibiotics, few antibiotics are there. Some will prevent the protein synthesis by binding to a 30s ribosome. Some will prevent the protein synthesis by binding to a 50s ribosome. Some will inhibit the transpeptidase enzyme. Some will bind to the some will prevent the translocation step. Some will okay. So likewise that. So you see streptomycin. Streptomycin क्या है? It's an aminoglycoside, right? So it inhibit the initiation step. It inhibit the initiation steps and causes the misreading of mRNA. ये क्या करता है? It inhibit the initiation step. It binds to the mRNA and causes the misreading of mRNA. जो mRNA के ऊपर कोड्स होते हैं वो properly read नहीं हो रहा है इसकी वजह से. And when streptomycin is given, bacteria is not able to synthesize its protein. Why? Because mRNA will bind to the this streptomycin will bind to the 30th ribosomal subunit of your 30th ribosomal subunit of bacteria, and it will cause misreading of mRNA. It will cause a misreading of mRNA. That's why faulty protein will be synthesized, and that will be degraded, or bacteria will die. Streptomycin inhibits the initiation, also causes the misreading of mRNA. Okay, also interfere with the normal pairing between codons and anticodons. So basically, it inhibits the protein synthesis. So same thing we are also going to see in the antibiotics. So mechanism of action you should understand itself only. अभी आप उसको एक mechanism समझो कि ये क्या करते हैं exactly. तो ये bind करता है 30 ribosomal subunit को, और जो initiation steps है उसको inhibit करता है. जो mRNA के ऊपर जो codons है उसको जो read कर रहा है ना, mRNA is read from pointers to 3' chain. ओके, तो वो रीडिंग जो है ना वो मिस रीडिंग करता है, प्रॉपर रीडिंग नहीं करता, और उसकी वजह से क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता. देन इंटरफेयर विद द नॉर्मल पेयरिंग बिटवीन कोडॉन्स एंड एंटीकोडॉन्स. देन tetracyclines also they binds with the okay, tetracyclines they also bind with 30th ribosomal subunit. Okay, and inhibit the binding of amino acid tRNA to the ribosomal complex. जो अमीनो एसिड tRNA होता है, जो कोडॉन के अकॉर्डिंगली mRNA के ऊपर जो कोडॉन है उसके अकॉर्डिंगली जो tRNA अमीनो एसिड लेके आता है. So it inhibit the amino acid tRNA to bind with the ribosomal complex. It will prevent the formation of 40. Okay, sorry, it will prevent the formation of ATS ribosomal complex. So it inhibits the eukaryotic proteins in this also, but it is not permeable inside the human cells. So that's why in the human it only inhibits the bacterial proteins in this. Puromycin. So structurally it is similar to amino acid tRNA. जो अमीनो एसिड tRNA का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही कुछ प्यूरोमाइसिन का स्ट्रक्चर होता है, and that's why it get incorporated into okay, it get incorporated instead of अमीनो एसिड tRNA. जैसे अमीनो एसिड tRNA बाइंड होता है राइबोसोम में, जैसे जैसे रीडिंग चलता है वैसे वैसे tRNA आता है ना. तो ये प्यूरोमाइसिन क्या करता है? इंस्टेड ऑफ अमीनो एसिड tRNA ये खुद ही वहां पे जाता है. So it is incorporated instead of amino acid tRNA in the growing peptide chain, and it causes its release. So inhibit the protein synthesis both in prokaryotic cells as well as eukaryotic cell. This puromycin. Then chloramphenicol. Chloramphenicol, you know that is a amino phenol derivative. It is a competitive inhibitor of this enzyme, peptidyl transpeptidase, which is a very important enzyme in the protein synthesis. So it catalyzes the peptide bond formation between two amino acids. तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है किसमें? दो अमीनो एसिड के बीच में, इन द राइबोसोम्स. दैट इज बॉन्ड पेप्टाइड सिंथेसिस. सो क्लोरोम्फेनिकॉल binds with this enzyme and inhibit this. That's why chloramphenicol will also prevent the protein synthesis. Then erythromycin. So it binds with the 50th ribosomal subunit of the bacterial ribosome and inhibit the translocation step. That's why inhibit the protein synthesis. Then diphtheria antitoxin or diphtheria toxin. It also prevent the translocation in the eukaryotic cell and prevent the protein synthesis. And also inactivate the elongation factor. Okay, elongation factor. कहने का मतलब ये, if you understand the steps in the protein synthesis, so most of the antibiotics they will bind to some step.
in the protein synthesis and they will inhibit the protein synthesis. Some antibiotic they will bind to a particular enzyme in the DNA replication. They will inhibit the DNA replication. Some antibiotic they will prevent the transcription. They will prevent the formation of mRNA from the DNA. So all antibiotics, if you want to understand the mechanism and all that, you should be clear about the microbiology and biochemistry, right? Now we have seen the protein synthesis. We have seen certain protein synthesis inhibitor. जैसे DNA replication के लिए inhibitor होते हैं. जैसे for example DNA topoisomerase inhibitors, topoisomerase inhibitors. जैसे आपका DNA gyrase inhibitors जो होते हैं, है ना, इटोपोसाइट्स, है ना, इटोपोसाइट्स. देन आपका जो बाकी प्लॉक्सिन है, सिप्रोप्लॉक्सिन, नॉरप्लॉक्सिन. What they do? They prevent the relieving of supercoiling after the replication, and that's why the bacteria will die if supercoiling is not relieved after replication at one end due to opening of double helical structure of DNA due to by the DNA helicase. एक साइड पे DNA हेलिकेज ओपन करता है स्ट्रक्चर, दूसरे साइड पे क्या होता है, वहां पे सुपर कॉलिंग होता है और डीएनए रिप्लिकेशन के बाद में वो सुपर कॉलिंग रिलीव होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज नहीं होता. क्यों? बिकॉज ये सिप्रोफ्लॉक्सिन और क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स वो क्या करते हैं, दे इनहिबिट द डीएनए टोपोआइसोमरेज, है ना. टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है, टोपोआइसोमरेज 2 उसको ही बोलते हैं अपन डीएनए गायरेज. सो उसका काम होता है कि आफ्टर रेप्लिकेशन जो स्ट्रेन आ चुका है एक साइड पे, जो सुपर कॉलिंग हुई वहां पे कट लगा के वो सुपर कॉलिंग रिलीव करना. बट ये इनहिबिट किए करते हैं उसके लिए, और वो उसको इनहिबिट करने के कारण उसका रिलीविंग नहीं होता और बैक्टीरिया मर जाता है. सो डीएनए gyrase inhibitor, topoisomerase inhibitor, etoposide, anti-cancer drugs. Again, some drug will prevent the, you know, transcription, actinomycin D वगैरह. Then some drug will prevent the protein synthesis in the bacteria. So streptomycin, tetracycline, puromycin, chlorpenicol, erythromycin, diphtheria, etc. Diphtheria, toxin, etc. Okay. Now after the protein synthesis, so as I told you, whatever protein is synthesized, that protein is nothing but the primary transcripts. The primary transcripts. So it is not a functional. जो प्रोटीन बना है वो फंक्शनल नहीं है. It is not a functional. That is known as the primary transcript. So it needs a certain modification so that active form of that protein will be there. So known as a chaperones and folding of protein. Chaperones, these are the particular type of protein which helps the, you know, chaperones and folding of protein. So newly synthesized proteins, they are not always active. Okay, because in the protein synthesis you got a linear chain, but active protein is nothing but the three-dimensional structure of protein. Okay? So three-dimensional structure is not okay there due to in the primary transcript there is only addition of amino acids one by one. There is only peptide bond, but when functional protein will be there, so three-dimensional structure is essential for its biological action. So few proteins can attain a correct conformation. Okay, after the synthesis, few proteins they will get correct conformation. कई कुछ प्रोटीन होते हैं जो सिंथेसिस होने के बाद में ऑटोमेटिकली उनमें they can attain a correct conformation. No problem with them. Okay, but others they will require help of other proteins. So most of the proteins they are inactive as such. So after synthesis they are inactive. They need a modification. So they require a specialized protein to get a correct conformation. So these proteins are known as chaperones. These proteins are known as chaperones. So question आ सकता है आपको, what is meant by chaperones? So chaperones are nothing but the specialized protein which helps a primary transcript to get a functional protein. जो प्राइमरी ट्रांसलेशन हो चुका है, ट्रांसलेट प्राइमरी ट्रांसलेट होगा, मतलब जो प्राइमरी प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुका है, दैट इज इनएक्टिव. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड initially it is inactive. It should be converted into active form. Now most of the protein, few proteins they get correct conformation after the synthesis due to folding and refolding, but few proteins need another protein which helps them to get a correct conformation. So these proteins are known as chaperones. Am I audible to you? Are you getting what I mean by chaperones? Okay. Now there are two systems. Okay, HSP70 system is there and chaperonin system is there. So these are the chaperones. Okay, first is nothing but the HSP70 system.
Now it is required for the correct conformation. So primary transcript will be converted into correct conformation by this HSP70 system, and chaperoning system is required for the folding, proper folding of protein. This is required chaperoning system. These two systems, they works. These are the two main modifications. There are other modifications also. We will see it known as a post-translational modification, but these are two main. So HSP70 system will help protein to get a correct conformation. Okay, and this chaperoning system will help protein to get a correct folding. Because active protein is nothing but the quaternary tertiary structure of protein, and in the protein synthesis you get a primary structure of protein. Now that protein should be folded and refolded to get an active protein. That is done by okay, few protein they attain folding and correct conformation by themselves, but most of the protein they require another proteins which helps them to get a correct conformation and to get a correct folding. That's why they are known as a chaperones. So chaperones, they are the folding proteins, or they are the conform, they helps the primary translate to get a correct conformation. So, protein misfolding and disease. Protein misfolding and disease. So after the after the synthesis of protein, जो primary translate बना है, जो primary protein बना है, it is a linear protein, है ना, linear है ये primary translate, it is inactive. ये protein आपको बाद में it should be properly folded. ऐसा कुछ folding उसमें होना चाहिए. Protein should be get properly proper conformation and folding, and then only it is a active protein. ये एक्टिव बनने के लिए इसको फोल्डिंग होना चाहिए, उसमें करेक्ट कंफर्मेशन. इट इज इनएक्टिव, पहला जो बना है प्रोटीन, है ना, इट इज इनएक्टिव. इट शुड गेट करेक्ट कंफर्मेशन टू बी एक्टिव. ओके, सो प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ओके, is required to get a functional protein. Now improper folding of protein result in the rapid degradation. अगर improper folding को है, improper folding of protein, that result in the degradation of protein. So one of the disease one of the disease is there known as cystic fibrosis. It's a common autosomal recessive disease. This is due to the changes in the gene. जीन में कोई दिक्कत आता है तो वो autosomal recessive, अगर आपके पापा को है तो आपको भी आ सकता है. Cystic fibrosis. Okay, so it is a common autosomal recessive disease due to the altered protein. Due to the altered protein. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है cystic fibrosis transmembrane conductance protein regulator protein, CFTR. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. Now this protein is not folded properly. It is this gene, actually this is gene which is mutated. This gene is mutated and cannot fold properly and get glycosylated, है ना, उसमें शुगर आइटम होता है, get glycosylated and transported and degraded, and that's why cystic fibrosis is there. Again, some neurological diseases are also there. Few neurological diseases are also there, where there is a collection of or aggregation of such misfolded proteins which in the cell. Okay, so there's some कुछ neurological disease होते हैं, इसमें भी क्या होता है कि ये protein misfolding होता है और वो फिर क्या होता है, एक जगह पे कलेक्ट होते हैं सेल में. There is a collection and aggregation of such misfolded protein in the cell and they're partially or they're partially degraded product. कुछ neurological disease में भी ऐसा होता है. Then prions means these are the particular type of protein. Proteogenous infectious agent. So prions are nothing but this degraded product of this misfolded. So they are known as a proteinous infectious agent, and the term prion is used to represent them. ये जो misfolding की वजह से जो प्रोटीन बना है, जैसे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज में होता है, there is a misfolding of protein and that is collected in and aggregated in the cell. So that protein is known as a prions. Now another disease is mad cow disease. इसके नाम भी बहुत खतरनाक है, मैड काउ डिसीज. मैड हो गई काउ, काउ अगर मैड हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होती है. मैड काउ डिसीज, अगेन इट इज वन ऑफ द अगेन डिसीज. मैड काउ डिसीज इज देयर. ओके, देन Creutzfeldt-Jakob disease is there. Creutzfeldt-Jakob disease is there. Alzheimer disease, Huntington disease, they are the examples of protein where, okay,
protein, they are the examples of this such kind of disease. Then protein of viral microbial pathogen also have been implicated in such kind of neurological disease. Look at ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं इन डिसीज में पाए जाते हैं मैड काउ डिसीज क्रूज वेंट जॉकब डिसीज अल्जाइमर डिसीज में हंटिंगटन डिसीज और प्रोटीन्स ऑफ वायरल माइक्रोबियल पैथोजन आल्सो हैव बीन इम्प्लिकेटेड इसमें ये भी बढ़ जाए प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया वायरस ये भी आ जाते हैं कभी नाउ post translational modification so folding means what to attain a correct conformation of protein to get a functional protein. So after the synthesis, primary translate the primary protein A that is a linear protein and it is not a functional. So the pro-insulin. So insulin is synthesized in the beta cell. So beta cell will synthesize the insulin or will release the insulin. So insulin कहाँ से बनता है? Insulin पहले बनता है pre-pro insulin. Pre-pro insulin आपने already देखा है pre-pro insulin. इससे मिलेगा आपको प्रो इंसुलिन उससे मिलेगा आपको इंसुलिन एंड व्हाट इज एक्टिव प्रोटीन कौन है इंसुलिन इज एक्टिव प्रोटीन सो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन होने के बाद में पहला बनता है प्री प्रो प्रोटीन सो प्री प्रो इंसुलिन व्हिच इज हैविंग आई थिंक है ना उसमें कुछ 110 अमीनो एसिड होते हैं आफ्टर दैट प्रो इंसुलिन में कुछ है ना प्रो इंसुलिन में कुछ 90 अमीनो एसिड होते हैं 90 मैंने देखा ऑलरेडी अभी याद नहीं मुझे एंड देन लास्टली इंसुलिन जो है उसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं सो ड्यू टू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्री प्रो इंसुलिन इज ब्रोकन डाउन इनटू प्रो इंसुलिन एंड देन प्रो इंसुलिन इज ब्रोकन डाउन इनटू नेटिव इंसुलिन एंड दिस इंसुलिन इज एक्टिव राइट सो दैट्स नोन एज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन तो इंसुलिन जब बनता है तो प्री प्रो इंसुलिन बनता है उसके बाद में उसका प्रोटियोलाइसिस करके आपको प्रो इंसुलिन बनाता है बॉडी बाद में उसको प्रोटियोलाइसिस करके इंसुलिन बनाता है तो इंसुलिन इज एक्टिव पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन फोल्डिंग इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन एडिशन टू दैट फोल्डिंग के बाद में भी ट्रिमिंग मींस व्हाट सम अननेसेसरी सीक्वेंस इफ इट इज कमिंग इन द प्रोटीन कुछ अननेसेसरी सीक्वेंस आ गए जैसे कुछ अमीनो एसिड की लगते नहीं वो लेकिन वो एक्सप्रेस हो चुके तो उसको रिमूव किया जाता है इंटीन means what इंटीन is nothing but the interventing proteins okay interventing जो प्रोटीन है उसमें अगर अननेसेसरी अगर कोई अगर सीक्वेंस वगैरह आ गया तो वो रिमूवल ऑफ इंटीन स्प्लाइसिंग मतलब कोई कटिंग है ना रिमूवल कोवेलेंट चेंजेस they are nothing but the post translational modification after the primary synthesis of after the primary protein synthesis so certain changes that is needed to get active protein so first one is nothing but the folding and defolding after that trimming is there trimming जो unnecessary part है उसको remove करना है trimming इंटेन they are nothing but the interventing proteins ये इसको रिमूव करते हैं there are two type इंटेन होता है एक्सटेन होता है एक्सटेन को ऐड किया जाता है इंटेन को रिमूव किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसक्रिप्शन में वैसा होता है ट्रांसक्रिप्शन में इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स होते हैं इंट्रॉन्स they should be removed and exons they should be added splicing and these are the post transcriptional modification so we have seen the summary so जो DNA है DNA has genetic material and from the DNA only you are going to get mRNA through a transcription process तो mRNA होता है types of RNA mRNA होता है then आपका rRNA होता है ribosomal RNA then आपका tRNA होता है tRNA क्या करता है क्या काम है tRNA का so tRNA has a anticodon which are complementary ये जो एंटीकोडन होते हैं दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री कोडन प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए टीआरएनए का काम क्या है इट विल कैरी वन अमीनो एसिड सो व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए इट इज नॉट ट्रांसफर आरएनए एंड इट विल देयर इज अ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू a 3' end of your tRNA by amino acid transferase so amino acid will be attached to a tRNA now tRNA okay there is a we have seen the steps ribosomal dissociation formation of 43S reinitiation complex
formation of 48S initiation complex, lastly formation of 80S initiation complex. Okay? So when this ribosomes and okay, so mRNA, this is the mRNA, so it has our कोडॉन, इसके ऊपर एक कोडॉन रहेगा, इनिशिएशन कोडॉन जो होता है वो एम, इसके बाद पहले इनिशिएशन कोडॉन जो भी कोडॉन्स होंगे, so first this they will find initiation codon at the time there is attachment of मेट, पहला तो मेथिओनिन आएगा, बाद में जो भी कोडॉन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी अमीनो एसिड आएगा उसमें उसके बीच में ट्रांसपेप्टिडाइल पेप्टाइड्स विल कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस चेन विल grow, this chain will grow, this chain will, and after the stop codon, after the nonsense codon, so it will break down the peptide bond and this is the primary transcript. Okay. So we have seen this already. Right. Now what is the additional part? I have yesterday made this. Okay, so we have seen the classification of amino acid at a very beginning subset when we was discussing about the proteins and amino acids. उसमें अपन ने देखा है कि amino acids their classification, एलिफेटिक amino acid कौन से है ना, aromatic कौन से है ना, acidic amino acid कौन से, basic कौन से. We have seen the branch chain amino acid, we have seen the hydroxyl group containing amino acid, we have seen the sulfur containing amino acids. So we have seen the chemical classification, we have seen the nutritional classification, essential amino acid, non-essential amino acids, we have seen that. But they might ask you some chemical name. So chemical name of amino acids, so you will not find this information. अगर आपने अपने कॉलेज में भी कोई बुक्स हो गए उसमें भी देखो आप, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको. Am I audible to you? Am I audible? Okay. So amino acids and their chemical name. So first amino acid is a glycine. So glycine is nothing but the, so you should remember all are nothing but the alpha amino acid. All are the alpha amino acid. ठीक है. Glycine मतलब क्या है? It is a alpha amino acetic acid. Glycine क्या है? Alpha amino acetic acid. Alpha amino acetic acid. So alanine क्या है? Alanine is nothing but again it is alpha amino propionic acid. Okay. Propionic acid. Alpha amino propionic acid. Okay. Then valine क्या है? V for valeric acid. So alpha amino isovaleric acid. Leucine क्या है? Leucine is nothing but the alpha amino isocaprioic acid. Isoleucine क्या है? What is isoleucine? Alpha amino beta methyl valeric acid. What is meant by serine? Serine क्या है? Serine is nothing but the, again alpha amino beta hydroxy propionic acid. Alpha amino beta hydroxy propionic acid. Threonine क्या है? Alpha amino कॉमन आएगा. Alpha amino beta hydroxy butyric acid. Threonine is a beta, okay, beta hydroxy butyric acid. Then phenylalanine क्या है? Alpha amino beta phenyl proponic acid. तो देखो ये क्या है, यहाँ पे कौन सा एसिड है उसमें, है ना, उसका आइबेक नेम जैसे. तो ग्लाइसिन इज नथिंग बट द अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड. Okay, alanine is nothing but the alpha amino propionic acid. Valine is nothing but the alpha amino isovaleric acid. Then leucine is nothing but the alpha amino isocaprioic acid. ये इन्फॉर्मेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपके पास जो बुक्स है उसमें नहीं है. Isoleucine is nothing but the alpha amino beta hydroxy alpha amino beta methyl valeric acid. Then serine is nothing but the alpha amino beta hydroxy propionic acid. Okay, serine. Threonine is nothing but the alpha amino beta hydroxybutyric acid. Phenylalanine is nothing but the alpha amino beta phenyl propionic acid. Glutamic acid क्या है? Alpha amino glutaric acid. G पर G glutaric. यहाँ पे भी V for isovaleric acid. Arginine क्या है? Arginine is nothing but the alpha amino delta gonadino n valeric acid. डेल्टा गोनेडिनो. तो इसमें ग्रुप भी कौन सा है वो भी समझ आएगा. इसमें क्या है? गोनेडिनो ग्रुप है. गोनेडिनो, राइट. सो व्हाट इज टायरोसिन? इट इज अ पैरा हाइड्रोक्सीफिनेलालनिन. सिंपली पैरा हाइड्रोक्सीफिनेलालनिन क्या है? टायरोसिन है. सो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विल कन्वर्ट फिनाइलएलानिन इनटू टायरोसिन. सो पैरा हाइड्रोक्सीफिनेलालनिन. और क्या है? अल्फा अमीनो बीटा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेनिक एसिड ना. बीटा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेनिक एसिड. ट्रिप्टोफैन क्या है? इट इज अगेन अल्फा अमीनो बीटा 3 इंडोल प्रोपेनिक एसिड. इसमें इंडोल होता है, इंडोल रिंग.
ये भी आपको यहाँ पे हेटेरोसाइकिल भी समझ में आएगा। व्हाट इज हिस्टिडीन? हिस्टिडीन इज नथिंग बट द अल्फा अमीनो बीटा इमिडाजोल प्रोपियोनिक एसिड का यहाँ पे क्या है, इमिडाजोल है ना, हेटेरोसाइकिल है। एंड प्रोलिन क्या है, इट इज अ पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी प्रोलिन क्या है, उसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, सो 4 हाइड्रोक्सी पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। प्रोलिन का ही हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन। लाइसिन का ही एक डेरिवेटिव होता है हाइड्रोक्सी लाइसिन। They are known as unusual amino acids. Then cysteine. What is the cysteine? Cysteine. Cysteine is nothing but the again alpha amino beta markapto propionic acid. Markapto propionic acid. यहाँ पे याद रखना है markapto propionic acid. Markapto propionic acid. Cysteine. Methionine. Methionine is nothing but the again alpha amino gamma methyl thio n butyric acid. एस्पर्टिक एसिड क्या है, अल्फा अमीनो सक्सिनिक एसिड। ग्लूटामाइन क्या है, डेल्टा अमाइड ऑफ अल्फा अमीनो ग्लूटारिक एसिड। लाइसिन क्या है, इप्सिलॉन अमीनो कैप्रिक एसिड। इप्सिलॉन अमीनो इप्सिलॉन अल्फा इप्सिलॉन डाई अमीनो कैप्रिक एसिड। ये आपको आईयूपैक नेम है, कभी कभी आपको एक आध बार क्वेश्चन आ भी सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पार्ट। ये आपके बुक में नहीं है, ये ऑलरेडी, ये अभी रिसेंटली। सो ग्लाइसिन एसिटिक एसिड, ये है ना, मतलब इन द टर्म्स ऑफ एसिड कि ग्लाइसिन क्या है, एसिटिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड है ना। अलानिन क्या है, प्रोपिनिक एसिड है ना। वेलिन क्या है, आइसोवेलरिक एसिड है, अल्फा अमीनो। ल्यूसिन क्या है, आइसोक्याप्रियोइक एसिड है। आइसोल्यूसिन क्या है, बीटा मिथाइल वेलरिक एसिड है। सेलिन क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड है। थ्रोनिन क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड। फिनाइलएलानिन क्या है, बीटा फिनाइलएलानिन प्रोपियोनिक एसिड। ग्लूटामाइन क्या है, अमीनो ग्लूटारिक एसिड। अर्जिनिन अर्जिनिन क्या है, डेल्टा गोनाडिनो एन वेलरिक एसिड। अल्फा अमीनो कॉमन रहेगा। टायरोसिन क्या है, टायरोसिन इज नथिंग बट द अल्फा अमीनो बीटा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ट्रिप्टोफैन क्या है, इट इज अ बीटा 3 इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। हिस्टीडीन क्या है, बीटा इमिडाजोल प्रोपियोनिक एसिड। प्रोलिन क्या है, पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी प्रोलिन उसका ही 4 हाइड्रोक्सी पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देन सिस्टीन क्या है, सिस्टीइन, सिस्टीइन क्या है, बीटा मार्कप्टो प्रोपियोनिक एसिड। मिथ्योनिन क्या है, व्हाट इज मिथ्योनिन, अगेन मिथ्योनिन नथिंग बट द गामा मिथाइल थायो एन ब्यूटरिक एसिड, गामा मिथाइल थायो एन ब्यूटरिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड क्या है, इट इज अ succinic acid, alpha amino succinic acid. What is a okay, glutamine? Glutamine is a delta amide of alpha amino glutaric acid. Then lysine, last one lysine, alpha epsilon diamino capric acid. These are the vitamins. Sorry, these are the amino acids and their IUPAC name or chemical name. You can see amino acids and their chemical name. Now some purines and pyrimidine analog or nucleotide analog, so they are used as an anti-cancer drug, they are used as a okay, they are used in the various diseases. So we have not taken biosynthesis of your nucleotides and their metabolism, because if we take that then it is a huge part, actually it is not required, okay। ये बहुत ही लंबा पार्ट है, जैसे अपन ने नहीं देखा है इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, लेकिन फिर भी मैं अगर बाद में अगर देखता हूँ उसमें निकाल के शॉर्ट में लगा दूंगा वहाँ पे आपको, ठीक है। सो वी हैव नॉट सीन इंडिविजुअल synthesis of individual nucleotides and their metabolism. So if anybody is interested, they can go and read from books. Okay? But their analogs are used in the certain diseases. For example, first one is allopurinol. So allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor. It is a purine analog. Allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor. It is used in the treatment of hyperuricemia and gout. Gout और hyperuricemia में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म होता है किसका, प्यूरिन्स का ज्यादा, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में यूरिक एसिड बढ़ता है। सो यूरिक एसिड बढ़ गया तो यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ गया, तो सम एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं आपके पैर हो गए, वो तो वहाँ पे ठंडा होता है थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट, तो वहाँ पे वो क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे वो
इंसोल्युबल बन जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में, एंड वहाँ पे वो फिर इन्फ्लेमेशन पेन करेंगे. सो दैट इज गाउट. So allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor used in the treatment of gout, which is a purine analog. Next होता है आपका 5-fluorouracil. It is anti-cancer drug. 5-fluorouracil markup-to-purine, 6-markup-to-purine, then 8-azathiogonine, then 3-deoxyuridine, then 5 or 6 aza-uridine, 5 6 or 5 or 6 azacystidine, 5-iodouracil. So all these are the drug used in the cancer. Okay? They get incorporated into DNA and blocks the cell proliferation. मतलब क्या ये सब एंटी कैंसर ड्रग है. ये कैसे एक्ट होते हैं? दे आर द एंटी मेटाबोलाइट, सॉरी, दे आर द okay, they are known as alkylating agent. So they are known as anti-metabolite. So what they will do? They will go instead of normal nucleotides. तो 5-fluorouracil, यूरासिल की जगह ये कौन जाएगा वहाँ पे डीएनए आरएनए में? ये 5-fluorouracil जाएगा. तो 5-fluorouracil गया तो फॉल्टी आरएनए बनेगा, एंड वो बाद में आगे की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा. अगर प्यूरिन की जगह 6 मार्कअप टू प्यूरिन गया, वहाँ पे वो फॉल्टी बन जाएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा. सो लाइक वाइज दैट they are known as anti-metabolite, or not a anti-metabolite, they are known as analogs of nucleotide analogs. Some of them are also used in the treatment of HIV virus. Then arabinocytosine, okay, it is used in the again cancer treatment, acts by interfering with the DNA replication. Azathioprine, so again it gets converted into 6-markup-to-purine, which suppresses the immunoreaction. It is mostly used as a immunosuppressant. Azathioprine immunosuppressant होता है. Arabinosyl adenine, so used in the treatment of neurological and viral encephalitis. Zidovudine and diadenosine, ये ड्रग दोनों भी किस में यूज किए जाते हैं? It is used in the treatment of HIV. Zidovudine and this diadenosine. Zidovudine is known as AZT, which is nothing but the 2-dideoxythymidine. ये AZT क्या है? Zidovudine को अपन AZT बोलते हैं, AZT. 2-3-2-dideoxythymidine analog है. Then duodenosine, that is a dideoxyinosine. They are used in the treatment of AIDS. So these are the few examples of your nucleotide analogs used as a drugs. Then you can see DNA जो होता है, that is okay. DNA is mostly double stranded. We have seen the alpha helix of DNA. Okay? Helical structure of DNA, double stranded helix. But there is some single stranded DNA, some RNA. So they will not obey the Chargaff's rule. So DNA, which is double stranded and helical structure, which will obey the Chargaff's rule. That is a molar equivalence of purines and pyrimidines. ये DNA का रूल होता है, Chargaff's rule. So adenine thymine is equal to adenine thymine, ATGC, guanine cytosine. Number of guanine is equal to number of cytosine, and number of adenine is equal to number of thymine. That is a Chargaff's rule, molar equivalence of purines and pyrimidine bases in the DNA structure. Double stranded DNA will follow the Chargaff's rule, but जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आरएनए जो होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, single stranded DNA, then RNA will not follow the Chargaff's rule. So double stranded DNA, RNA in the certain viruses, मतलब कुछ वायरस में double stranded RNA होता है. So the double stranded DNA and double stranded RNA will follow the Chargaff's rule, will obey the Chargaff's rule. But in some viruses known as a retrovirus, कुछ वायरस होते हैं उनको बोलते हैं अपन retrovirus. Now in the few retroviruses, RNA is a genetic material, and they are oncogenic viruses. Oncogenic मतलब क्या? Cancer causing. So these viruses, retroviruses, they are cancer causing viruses. Now what they do? They synthesize DNA from RNA. But normally क्या होता है कि DNA का replication होता है, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है. Central dogma of molecular biology है. But
कुछ बैक्टीरिया है उनका, कुछ वायरस है उनका जेनेटिक मटेरियल ही क्या है, आरएनए है। योर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, वो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उससे आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, उससे प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन, है ना। बट कुछ वायरसेस में क्या है, रेट्रोवायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उनका डीएनए होगा, तो उनके रेप्लिकेशन के लिए, उनके ट्रांसलेशन के लिए तो डीएनए तो लगेगा ना, है ना। तो डीएनए तो नहीं है उनके पास सिर्फ आरएनए है, विच इज जेनेटिक मटेरियल। तो वो क्या करते हैं, वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, they synthesize the DNA from RNA by using one enzyme. They have a particular enzyme known as a reverse transcriptase. तो इनमें क्या है, एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उनके नाम में रखा है, इसके नाम में क्या है, रिवर्स है। रिवर्स किसका रिवर्स है भाई, क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, RNA to DNA. Okay? So these retrovirus, they will have a reverse transcriptase enzyme and they synthesizes the DNA from RNA, which is complementary to DNA for the viral RNA. Okay? So reverse transcriptase. For example, your HIV virus, है ना, आपका जो HIV वायरस होता है वो भी क्या है, एक रेट्रोवायरस है, and that has a RNA as a genetic material. So it will synthesize DNA from RNA by the reverse transcriptase, and few drugs inhibit this enzyme, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उसमें भी तो होता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो दैट्स व्हाई, आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली, एम आई ऑडिबल? ओके, देन राइबोजाइम्स एंड देयर फंक्शन, ये भी एडिशनल पॉइंट यहाँ पे डाला है मैंने, राइबोजाइम्स एंड देयर फंक्शन, है ना। राइबोजाइम्स मतलब क्या, आरएनएज, ओके, राइबोजाइम्स एंड देयर फंक्शन, राइबोसोमल आरएनए एंड देयर फंक्शन, है ना। राइबोसोम्स मतलब वही आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए एंड देयर फंक्शन। सो पहले होता है आरएनए। सो व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोमल आरएनए? सो वी हैव सीन ribosomal RNA is very important. It is a side for protein synthesis. So peptide bond formation and protein synthesis. It is R. Now another is there. There's a R known as RNA-P. 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 Ribonucleotide particles. Ribonucleotide particles. इसको बोलते हैं ribonucleotide particles. RNA-P. So RNA cleavage and ligation. इसका काम होता है RNA को ब्रेक करना एंड ज्वाइन करना। मतलब क्या है, सो आरएनए जो बनता है तो उसमें कुछ अननेसेसरी न्यूक्लियोटाइड बेसिस आते हैं। सो अननेसेसरी न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो आते हैं उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स, है ना। और कुछ पार्ट जो होता है कोडिंग रीजन वो डिलीट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन्स। सो इंट्रॉन्स जो है ना वो रिमूव करना चाहिए, तो दे इंट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स शुड बी added. So DNA, okay, so that RNAsP was doing same thing. So RNA cleavage and ligation. So it will remove the introns and it will add the okay, it will add the extrons. Then next होता है self splicing RNAs. So it causes the DNA breakdown. RNA as a spliceome. तो उसका काम होता है RNA splicing ब्रेक करना। इन विट्रो सिलेक्टेड आरएनएस, इन विट्रो सिलेक्टेड आरएनएस, तो उसका काम होता है इन विट्रो सिलेक्टेड आरएनएस। सो आरएनए पॉलीमराइजेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ आरएनए, अमीनो एसिलेशन, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, डाइसल्फाइड एक्सचेंज, ये सब काम करता है ना आरएनएस, आरएनएस एंजाइम, सॉरी आरएनएस राइबोसोम्स। नाउ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जब आरएनए बनता है डीएनए से तो दैट इज नोन एज अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स नीड्स टू बी मॉडिफाइड। सो एंजाइम राइबोन्यूक्लियेजेस, ये एंजाइम जो होता है राइबोन्यूक्लियेजेस, ये क्या करता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। Ribonucleases are involved in the processing of tRNA, rRNA in the both pro as well as eukaryotic cells. तो राइबोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो करता है, क्या करता है, मॉडिफिकेशन, किसमें, आरएनए में। आरएनए क्या है, ट्रांसक्रिप्ट है, डीएनए से आरएनए बना है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सो जो आरएनए बना है दैट इज एचएनआरएनए। तो
जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, your double stranded DNA is there, right? So from the DNA we are going to get a RNA by the process of transcription, and this is known as a hnRNA. hnRNA, heteronuclear RNA, hnRNA. Okay. Now from that RNA, native mRNA is made by modification. तो ये RNA में modify करते हैं और ये mRNA बनता है. तो क्या क्या modification अपन देखेंगे. Okay. Now first tRNA. Okay. So from the from the hnRNA, जो hnRNA बनता है उससे tRNA कैसे बनता है? By trimming, converting converting the existing base into unusual one. जो base होता है existing base, basis नहीं है base. ट्राइमिंग मतलब पहले तो ट्रिमिंग होगा, कट होगा, कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग बेसिस, जो पहले ही बेसिस है एग्जिस्टिंग बेसिस, ऑन अ mRNA या ऑन अ RNA दैट इज कन्वर्टेड इनटू अनयूजुअल बेसिस, अनयूजुअल बेस बनाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ CCA एट 3' end, एडिशन ऑफ CCA एट 3' end, prokaryotic cell as well as eukaryotic cell needs post transcriptional modification in case of tRNA. tRNA कैसे बनता है? जो hnRNA बना है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उससे ये tRNA बनेगा. कैसे? by trimming and by converting the existing bases into unusual bases, say addition of CCA at 3' end. then rRNA कैसे बनता है? ribosomal RNA. ribosomal RNA कैसे बनता है? from the primary transcript. They are also subject to post transcriptional modification, but in case of mRNA it is very important, so that's why. So post transcriptional modification of mRNA, post transcriptional modification of mRNA occurs in the nucleus. ये modification कहाँ पे आता है? Occurs in the nucleus, and after modification mRNA synthesis mRNA is synthesized in the nucleus, and modification, that is a post transcriptional modification, is also done on the nucleus, and after the modification it is transported into cytosol of the cell, right? So what are the different modifications that has to be done after the transcription? ना ट्रांसक्रिप्शन में आपको क्या मिला है? ट्रांसक्रिप्शन में मिला है आपको प्राइमरी आरएनए, उसको बोलते हैं अपन एचआरएनए. एचआरएनए ये प्राइमरी बना है. तो उससे क्या बनता है? फिर राइबोसोमल आरएनए बनता है, उससे फिर आपका टीआरएनए बनता है, उससे फिर आपका एमआरएनए बनता है. तो एमआरएनए नीड्स अ मेजर प्रोसेसिंग, दैट्स व्हाई. ओके. सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए, मतलब क्या? एचएनआरएनए से क्या बनेगा अभी? एमआरएनए. क्योंकि ये क्या है? इट इज नथिंग बट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, उससे आपका आरएनए बना है. लेकिन जो आरएनए बना है उसको अपन बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इमीडिएटली एमआरएनए नहीं बनेगा, ये पहले ये बनता है, इसको तोड़ के मरोड़ के अपने को जितना लग रहा है वो एमआरएनए बनेगा. So HNRNA needs a post-transcriptional modification to form a mRNA. Now, what are these modifications? So first, there is a 5' end के ऊपर एक capping लगता है. 5' end capping. There is a okay. It is capped with 7-methylguanosine. Now, 5' end of HNRNA is capped with the 7-methylguanosine. 7-methylguanosine ये न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड किया जाता है. 5 to 5' linkage. It is required for the translation and stability of mRNA. अगर ये कैपिंग नहीं होता है तो फिर ट्रांसलेशन में दिक्कत होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में दिक्कत होता है, mRNA को स्टेबिलिटी भी नहीं मिलता. सो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA दिस कैपिंग इज रिक्वायर्ड. 7-methylguanosine, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार. सो इन द mRNA इज कैप्ड विद द फॉलोइंग. वो पहले भी हुआ है 7-methylguanosine, हाँ वो पहले ही था. 5' end capping, that is one of the post-transcriptional modification of mRNA. So mRNA is capped with the 7-methylguanosine, 5 to 5' linkage. It is required for the translation as well as stability of mRNA. So who is the methyl donor? Methyl donor कौन है? S adenosyl methionine is the methyl donor. Then second modification होता है addition of poly A tail. Again to stabilize the mRNA. adenosine nucleotide that is added to a 3' end. बहुत सारे मतलब 10
10 to 15 base pairs, they are added at the 3' end of mRNA known as a poly A tail. AQ adenosine nucleotide इसलिए poly Q बहुत सारे 10-12 ऐड किए ना इसलिए poly A tail. To stabilize the RNA, adenosine nucleotide is added at 3' end after the transcription, right? Poly A tail. Third is nothing but the removal of introns. Introns क्या है? Introns, they are the intervening nucleotides in the mRNA. mRNA में कुछ extra nucleotides आ चुके हैं, interfere कर रहे हैं. Intervening nucleotides they must be removed, and they are याद रखो यहाँ पे इंट्रॉन्स मतलब क्या? इंट्रॉन्स दे विल नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, दे आर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर द एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर इंटरफेयरिंग द mRNA. So introns will not code for any amino acid, that's why they must be removed from your mRNA. Okay, so does not code for any amino acid and that's why protein and must be removed. क्वेश्चन आपको नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स क्या होते हैं नाइपर के लिए. और जो गेट एग्जाम होता है, गेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स. जीपैट के लिए अभी तक कितना नहीं आया है इसमें. सो इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग. ओके, दैट्स व्हाई दे मस्ट बी रिमूव्ड एंड इट इज डन बाय स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स. एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं स्नर्प और small nuclear ribonucleic particles, SNRNPs. Okay. Then exons क्या होते हैं? Exons on the mRNA, they are nothing but the coding region, but they are not present on the mRNA. तो हम छूट गए, जैसे ये यूजलेस ऐड हो गए, जैसे जो यूजफुल है वो छूट गए. So these are the again sequence of base pair which is a coding region, which is a part of coding region, but they are not included in the mRNA. They are not included in the mRNA, and that's why they must be added in the mRNA. And okay, that's why they are known as exons. So exons of the mRNA will code a protein, and they must be added in the mRNA. So this is another post-transcriptional modification. There is one disease known as a beta thalassemia. Now it is due to the faulty splicing of HNRNA. HNRNA क्या करता है? ये इंट्रॉन्स रिमूव करता है, लेकिन अगर कुछ गलत रिमूव किया तो उसकी वजह से एक डिसीज होता है बीटा थैलेसीमिया. देन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड. जो भी आप जो बनते हैं प्रोटीन्स, उसके बाद प्रोटीन्स मतलब क्या है? प्रोटीन्स आर नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. सो these proteins need a modification to become an active protein. So what is the modification? So post translational modification of proteins and their amino acids. Few examples. Okay, जो अमीनो टर्मिनस होता है, NH ग्रुप होता है अमीनो एसिड में. प्रोटीन का अमीनो एसिड का अमीनो टर्मिनस. So in the protein you have amino acid and you have two terminus, carboxy terminus and amino terminus. So what is the modification at a amino terminus? So there is a glycosylation, there is addition of sugar, there is a acetylation, there is a myristolation, means myristic acid, there is a formylation, addition of formic acid, like this. So this is the modification at a amino terminus. Then modification at a carboxy terminus. Carboxy terminus from the CO group. So there is a methylation, over there. ADP ribosylation is there. This is addition. Now in case of arginine के प्रोटीन का जो arginine है उसमें methylation भी होता है. जो प्रोटीन का सिस्टीन होता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डाइसल्फाइड फॉर्मेशन और सेलिनोसिस्टीन फॉर्मेशन. जो सिस्टीन अमीनो एसिड है उसके बाद में सेलेनोसिस्टीन आता है. सेलेनोसिस्टीन क्या है भाई? सेलेनोसिस्टीन इज नथिंग बट द 21 अमीनो एसिड. आपको मैंने बोला था 21st अमीनो एसिड कौन है? सेलेनोसिस्टीन. 22nd कौन है? पायरोलाइसिन. 22nd कौन है? पायरोलाइसिन. So 21 and 22nd amino acids. So in the nature 300 amino acids are there, but out of that only 20 amino acids they are found in the protein structure, and that's why these 20 amino acids they are known as a standard amino acid. But recently 21st amino acid and 22nd amino acid has been discovered. What is 21? Selenocysteine. Selenocysteine is 21 amino acid. It's 22 pyrolysin. You have to remember. Okay. So cysteine is modified. Cysteine residue of amino proteins are modified
So they are modified for disulfide bond formation, they are modified for cellulose formation, glycosylation, है ना, जैसे उसके उसी टाइप के जैसे एस्पर्टिक एसिड। तो एस्पर्टिक एसिड के रेसिड्यू में फॉस्फोरिलेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ग्लूटामिक एसिड का रेसिड्यू है तो आपने ये देखा है, मिथाइलेशन होता है, गैमा कार्बोक्सिलेशन होता है। ये जो गैमा कार्बोक्सिलेशन है इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी देखा है। सो एक्टिवेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेशन, वो क्या है? What is the activation of blood clotting factors? Vitamin K dependent blood clotting factors. Vitamin K epoxidase, vitamin K epoxidase is coupled with the activation of blood clotting factor. कैसे? So during that epoxidation and reduction of vitamin K, so that reaction is coupled with the gamma carboxylation of glutamic acid residue in the blood clotting factor. Blood clotting factor क्या होते हैं? Proteins, है ना, दे आर इनएक्टिव, दे नीड टू बी एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मतलब क्या है? इसमें मॉडिफिकेशन होता है। क्या मॉडिफिकेशन होता है? गामा कार्बोक्सिलेशन। क्या? ऑलराइट, सो लाइकवाइज दैट हिस्टिडीन रेसिड्यू इज मिथाइलेटेड एंड फॉस्फोराइलेटेड। लाइसिन रेसिड्यू के लिए एस्टाइलेशन होता है, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, बायोटिनाइलेशन। मतलब इसमें बायोटिन ऐड किया जाता है। बायोटिनाइलेशन मतलब बायोटिन ऐड होता है विटामिन B7। देन मिथियोनिन, मिथियोनिन में क्या होता है? सल्फोक्साइड फॉर्मेशन होता है ना। फिनालालेनिन में ग्लाइकोसिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, है ना। प्रोलिन में हाइड्रोक्सिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन। सेरिन में होता है फॉस्फोराइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। टायरोसिन में हाइड्रोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड सल्फोनेशन, हाइड्रोनेशन। थ्रियोनिन में फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन। सो ये है क्या एग्जैक्टली? आपको और एक बार आइडिया देता हूँ। सो आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सो एज आई टोल्ड यू, प्रोटीन नीड्स ए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन है आपका अमीनो एसिड का चेन, है ना, अमीनो एसिड का पॉलीमर, है ना। तो इनएक्टिव प्रोटीन नहीं भाई, एक्टिव प्रोटीन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के ऊपर, certain amino acid they are carboxylated, certain amino acid they are acylated, methylated, glycosylated. Glycosylation मतलब क्या? addition of sugar, sulfoxide formation. So these are nothing but the post translational modification in the proteins and their amino acids. Are you getting or not?